Namaste Abhijit bhai, welcome to Taking the Stock second season episode 4. Namaste Vishal bhai. Before we start further conversation, I'd like to tell everyone that this show is just for education, and any stocks or any fund or any script, any option related data named or spoken over here is only for the purpose of education, so that you can get more knowledge about the subject, so that you can learn about the subject. Any investment done based on this kind of data that we are presenting over here will be at your own risk and should be done after consulting your investment advisors only. Yes, Abhijit bhai, welcome to the show. Yes, thank you Vishal bhai. Thank you for inviting me. And most welcome to the show. We would like to introduce you first. Abhijit bhai is an expert in options, derivatives, currency market, most of his in addition to equities. So we would like to know more about you, Abhijit bhai, from yourself. And can you tell us something about yourself, and can you tell us how your journey with the investment arena, or how your interest in equity market, derivative market started? What was the starting point? What was the age at which you started? And how did it begin? The beginning of the journey. Yeah, always each and every journey is itself interesting. Okay, so what I know is when someone start his journey of getting financially what we say financially free or start earning. Okay, they just they are into a some kind of what I say when we start our journey. Okay, it is by choice or it is by force, right? There are two Right. kind where we start from. Okay, these are two kind where we start from. One is by choice and one is by force. I into financial market was not by choice but by force. Okay, so initially when I started my career, I was looking for some kind of job, and one of my friend told that okay, we are having one kind of opening in this particular firm, which was a sub broker of Sher Khan. And I was not knowing anything about equity market at that time. Later on, I was in need of a job. I was desperately in need of a job, so I started that job particularly with marketing of demat accounts. That was way back in 2004 2005. After starting that journey, okay, hence it was by force. Early I was not enjoying that because I was not knowing about equity. I haven't studied equity before that. But later on, when I just started slowly and gradually, the interest came on. I realized that this is the fantastic market from where we can earn more money. Okay, but as earning from equity is really difficult. But at that time there was no awareness, and it seems like it is very easy to make money from equity market. Just go and invest, buy some shares, sell some shares, and be rich. Okay, so after then, slowly, gradually, I shifted my job from one firm to another firm, and I have done job in around 6 to 7 corporates. After then, at one point of time, I got opportunity in arbitrage. The arbitrage was fantastic thing. Over there, I spent around 7 years of my life, and that job where I was doing arbitrage, that was fantastic learning for me because I Can you, saw. sorry to interrupt, can you explain our viewers? Most of them are retail investors and most of them don't know about the term. So, can you explain arbitrage a little bit, just in Yeah, 2 minutes? yeah, arbitrage is like from buying at one place and selling simultaneously, selling at another place. So there are two exchanges in our country, that is NSE and BSE. So arbitrage means from buying in NSE or selling in BSE, or buying in BSE and selling on NSE. You can also make combination of futures with that, means buying in cash market and selling in future market.
and there is a difference between the rates over there in each and every exchanges. So we have to just catch that difference of rate, okay, buy where it is cheap and sell where it is on higher side. Okay, so this is called arbitrage. So arbitrage basically acts on bringing parity. It also is an income source, and also it brings parity between the prices in both exchanges, right? Yes, definitely. So at that time, arbitrage was on peak because only manually arbitrage was happening at that time, and arbitrage was at peak, and it was a fantastic earning years for me. But as we know that when we earn something more than what we deserve, ultimately it goes back. Okay, so there was not a loss in the market, but slowly and gradually arbitrage start deteriorating. Softwares came into play. There were a lot of algos which were introduced in the market. This is which year roughly? That is from 2005 to 2012. So already algos started coming in the, during this time. Yeah, algo started coming by 2010, and by 2012, algo take full charge on the market in arbitrage. Okay. So from 2012, arbitrage was totally, I cannot say it is gone from the market, but manually it was not negligible. Done. It became negligible. And nowadays arbitrage is done only through algos. Okay. So initially, when there were no algo, we manually do arbitrage, and we were earning like anything. That was a great period from 2005 to 2009. But slowly, income starts coming down. And after 2012, I again shifted to a client work, into a job in a corporate. So again, I have to start from scratch, and slowly and gradually after that I have changed to firm, and after then I started my own business in 2017. I am into client work right now. I provide financial distribution services like equity, mutual fund, insurance and all. And since 2017 I have started my own firm called Cashflow Investment Services, and since 2017 I am here, and still it is going, and there is a lot more to go. Tell us something more about Cashflow Services, your firm, and tell us. I understand that you are a certified financial planner. Okay. So first we'll start with your firm, and then my next question will be: we as Indians, are we good finance planners? If yes, then it is very good. If no is your answer, then please give us, or even if yes is the answer, you can give us insights to so that we can improve ourselves as financial planners. Okay, so I have started Cashflow Investment Services in 2017. You can show. I'll just sorry. Okay, now I have enabled you. You can share the screen. Okay. So here we are, Cashflow Investment Services. So I have started Cashflow Investment Services in 2017. Okay, initially there was a lot of struggle for 2 years in starting, and just I was on the track, and suddenly COVID arrived. So, but after COVID, the market shoot up, and it has helped me a lot to get established. And right now we are serving around 500 clients overall in equity and mutual fund in combined. And just a second. So 500, I guess, is a good number starting from 2017 till 22. If you say you added around 100 clients per year. So that is a good number in my opinion for a singularity firm. Correct me if I'm wrong. Yes, definitely. It is a very good number. And I have just, screen is visible right now? Yes, now it is visible. So initially there was a lot of struggle, as I said, but
I have made some kind of commitments to my business that I will work like this, and slowly and gradually, power of compounding. Clients are very good. They are giving reference to me, and from reference, I got a good client base later on, and still it is growing. My clients are coming from reference itself because we are serving very well. We are providing very good services, and what we main thing we believe in integrity, and we serve them. We make them. We help them to make profit. And one of the great thing in my firm is 97% of my client are in profit. That is a great number. So now coming to my earlier question regarding investment planning. So do you think we Indians are good finance planners? Actually, there is a lot of perception regarding financial market. Each and every person in our country feels that he is very much financially aware. Each and everyone is like, I know everything. I know what is financial market, but the actual picture is a little bit different from original. Everyone is MBA. મને બધું આવડે. મને બધું આવડે, yeah. So original picture is different from that. As we know that our base in schooling, what we learn, what we are getting education from, that institute doesn't provide any kind of knowledge regarding finance. Okay. Later on, if a person is going for a MBA sort of thing, then also over there also the what we say the education syllabus actually is not proper to guide or to help them how they should design their finance. Okay, they give knowledge about the financial product, but they don't give knowledge about how you should plan your finance. Okay, financial terms are okay with everybody, but how to make it happen, how to plan your finance, or what is the ratio where you should go, from where you should start, what is the allocation, proper allocation, people are totally unaware of that, and very few percentage of people are following this kind of financial planning method in our country. See, my personal formula, if I tell you, is 25, 25, 25, 25. That is 25% liquid cash, liquid cash or similar instruments like FDs which you can redeem in 1 or 2 days. 25% I would invest in real estate, including my own home. 25% of my wealth is invested in gold, and 25% in equity. This is my personal formula through which I found a little bit of success. But this is over a period of 25 years. Yeah. No, actually, the thing is, you have to change little bit in this. There is one more good formula, means how finance should be planned. You are seeing a pyramid in front of you on the screen, Yes. right? Yes. So what happened that first of all, it comes cash flow. Okay. A lot of people doesn't understand their cash flow first. People are not knowing what they are earning. People are not knowing what they are spending. Okay. People make decisions regarding investment and other asset buying without knowing their cash flow itself. Okay. People spend their money without knowing their cash flow. Okay, so Agreed. first you need to understand your cash flow, that what is your income, what are your fixed expenses, which is which you cannot let go, like household expenses, education expenses of children's. These all things people has to consider first. So first analyze what is your income. After then deduct your expense, and the amount which is remaining from that is to be planned. Okay, now where is to be planned or where you can invest after generating a positive cash flow. Okay, you have to make your life secure, because your family is dependent on that.
Okay, so you have to plan insurance properly first. Okay, so if you are having excess cash flow, first investment is to be done for life insurance, medical insurance, and general insurance, because this is the thing where a lot of people make mistake. They are not having adequate insurance in themselves, and they start earning, they invest, they do all the things, but at some point of time, in any emergency, in medical emergency, or if there is a life threaten, then over there they lose all their investment, and again the family is in problem. So after generating positive cash flow, you have to go for wealth protection, which is through insurance. So first you take life insurance through term plan. Okay, term plan is pure insurance. Term plan is called insurance. Another products are investment product, which I would not recommend. Term plan is proper insurance. It is pure insurance, and one should everyone should have term plan. Okay, that I is. totally agree, because when you are insuring something, this is my opinion, just I'm sharing with you. When you are insuring something as valuable as life, you know, in that, why to put your investment in equity, which is again a kind of, you and me are in equity market, so we know that, we do it quite scientifically, but still it is speculative to some extent, right? So when you are buying insurance, I personally also believe that it should be more related to term plans and medical insurance. General insurance is also good for cars, vehicles, house, shops, etc., but life insurance should be treated purely as life insurance in my view, Yes. and not as an investment instrument, Yes. which, correct me if I'm wrong, but most of Indians consider life insurance as an investment opportunity, and I really feel disturbed by this fact. Yeah, you are perfectly right, Vishal bhai. Life insurance is to that should be taken for risk cover only, not for investment. It is for risk cover only, and medical insurance is also, as medical cost is increasing day by day, and general insurance also necessary, like fire insurance. Fire insurance is there. Car insurance is there. So this is the thing where people should be aware first. And if this base of pyramid is clear, is this base of pyramid is strong, then only you can go ahead of that at the top of pyramid. If your base is weak, okay, that is for sure that one day that pyramid will collapse and you will come Very down. nicely explained. Very nicely explained. So after taking insurance, okay, it comes to saving. Okay, saving gains like mutual funds. In mutual funds are equity, but that is for saving because it is for long term. Okay, fixed deposits, gold, etc. So saving is like one should have proper financial plan of their goal. Okay, One initially. more interruption I will make. Yeah. I have seen, I would like to, hear your comments about it, because I am also dealing in mutual funds, and a lot of my clients are taking mutual funds from our firm. So one thing I have seen is that when mutual fund is giving a return like 20-30%, say somebody has invested in 2018-19, and by 21, because of COVID fall and bounce thereafter, they were getting 30, 35, 40% gains in their insurance. So lot of people, they redeem the insurance and treat it, then they buy again after a few months, and then again after a few months, when there is 20-30,000 profit, they want to sell it. And lot of people are treating mutual fund like equity. Would you like to comment on this? Have you seen this happen? And how you would suggest our the people who are watching this video to go about it? Yeah. So definitely, Vishal bhai, this happens everywhere. People just try to judge the market. People treats mutual fund as an equity only, but actually mutual funds are for long term. Okay, it is for wealth creation, not for trading. Okay, it is for wealth creation, not for trading, and this is what people are financially unaware.
which we were talking about, that how much people are aware about finance. So this is where people make mistakes. I have seen huge folios getting redemption when the market is volatile, market is coming down, or even for profit booking. But Correct. mutual funds are for long-term investment. And once you transact in that, if you try to transact mutual fund, means transact on redemption side, when you sell mutual fund, your whole power of compounding effect is gone. Okay, when you again start new investing, it will It's again starting start. from zero. Okay, so if you want to sell anything, you can directly come to equity. It is also an option available for you. So for mutual fund, it is like you should not sell mutual fund. You should not sell redeem mutual funds in any kind of condition. Mutual funds are to be in mutual fund. You should invest for your goal achieving. Like that is for goal achieving. Okay, you should invest in mutual fund for goal achieving. Right, my goal is of retirement. Okay, if I am having that after 60, at 60 I will retire, and at that particular time I need a good lump sum money, so that I will invest in mutual fund for 20-25 years. I will invest in mutual fund for my daughter education. I will invest in mutual fund for my daughter marriage. I will invest Or in for buying a car, buying a house. car, buying a house. So mutual fund investment should be done goal based, more likely. Okay. That for particular goal, I am investing in this particular fund for this much this particular period. That should be fixed. Okay, you no need to sell at each and every time and judge the market in mutual fund, because mutual fund itself is a conservative product. Okay, so already there is lot of conservativeness in that particular product, because it is managed by fund manager. Okay, And it is fund managers are experts of their they field, are right? expert, but Their yeah, teams have experts of the field. yes, yes, yes. So already diversification is more in mutual funds. There are a lot of 30-40 stocks at least in a fund. So there is already diversified. It is already called a diversified product. So no need to sell over there. Okay, mutual fund investment should be for long term, and it should be considered as saving, not an investment. A very good point. As saving I product. hope that a lot of people who trade in mutual funds stop it and let it compound, enjoy the benefits of compounding by long-term investment, by goal-based investment in mutual funds. Yes, definitely, definitely. Continue, please. And at top, it comes investment, uh, is equity, real estate, antiques. So equity, we all know what is equity. Even real estate. Real estate is little bit difficult to invest, because it requires lot of capital and a lot of knowledge about the particular real estate thing, means particular building or land. So real estate investment is little bit difficult. It is also less flexible. It is not movable property. Okay. Another is antiques. Antiques are also very good investment options. Really, A lot of people does not know about this kind of this particular what we say, uh, this kind product of investment. kind of investment, like so. But antiques are also a really very good investment. But also this investment really needs a very good knowledge about the product where you are investing. So major Just part, like just like options, which yeah, is our just like next options. topic. Yeah, just like options. Okay, so equity is most easiest way to invest and to get higher returns. Okay, to make wealth creation. What do we say? Equity is very good investment, or easiest product to invest for wealth creation. So this is how a financial pyramid works, and one should consider this financial pyramid for investing. If you don't follow this, then later on you will find some difficulties in your wealth creation journey. Fantastic. Now, coming to our next topic about equity and options.
Equity, we have been talking a lot. We will talk a little bit further. But why options? Why I want to emphasize options is that first of all, you have expertise in the field and you are here. So I want you to allocate maximum time of the out of the remainder of this talk show on options. Other thing I've observed is the new generation is kind of crazily behind options and futures and derivatives, and most of them unfortunately are doing it without proper knowledge of the subject, without understanding the science, the statistics, the math of the subject, and end up losing money, whether they say it or not, whether they project it or not. But SEBI has given out this data that 90% of people are losing money, or 90 or more, I think, are losing money on options and futures. And per person, there is a loss of average about 50,000, those who are dealing in options regularly. I again say that, investment is the only thing where you don't need a license. Without any knowledge, you can just plunge in. Swimming करना है तो स्विमिंग सीखना पड़ता है, गाड़ी ड्राइव करनी है तो गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है। इवन एक जमाने में तो साइकिल और रेडियो का भी लाइसेंस होता था, बराबर, लाइसेंस राज का जमाना था। खैर वो जमाना आज नहीं है। बट द थिंग इज दैट विदाउट लर्निंग, without understanding the science and math, people invest, people go for options. What will be your what will be your two words on the subject? And please throw some light, please guide us, please tell us what options are and how we should use them for wealth protection and creation. Yeah. So what I know is trading is means earning from trading is most difficult thing to do in easiest way. So earning from trading is most difficult thing to do in a easiest way. What people means equity option trading is easily available on each and every platform right now. So what people feel is like they will just put their 4 or 5 thousand and they will start earning 50, 60,000. But if it's so easy, I would be at another level right now. Okay. So the thing is, people do not understand, even particular this young generation. Okay, I really agree with that if you don't trade, okay, there is no chance of creation of wealth, right? So for wealth creation you have to trade, but you should consider your knowledge first. You should learn that first, what are options, how they are working, what are option greeks, is there any how much probability is there of profit after buying an option, or what are the risks when you sell the option. There are a lot of things which they should consider first. They should learn option, and after then they should come into play. And I definitely there is a very good opportunity of making money, create your wealth, or protect your portfolio by options. Options are really fantastic thing, but as I said, it is to be used properly and with full knowledge. Please give us some knowledge. So options is a kind of derivative product, not kind of, option is derivative product. Okay, so let us come to a derivative product. Okay, so option is a derivative product. It is concept of derivative. There is two type of derivative products. One is future and another is option. Okay, in option there are two kind of option. That is, one is call option, another is put option. Okay, call option gives right to buy an underlying asset, and put option gives a right to sell the underlying asset. In local language, we can say that call is teji and put is mandi. This is very easy to understand. Call is teji and put is mandi. So when you buy a call, you are doing teji. Okay, call is equal to teji. Then when you are buying a call, you are doing teji. Matlab you are on bullish side. Okay. And when you buy a put, okay,
it is you are buying a mandi, and that is on bearish side. Similarly, when you are selling a call, okay, when you are selling a call, what you are doing is you are selling a teji, means indirectly you are doing mandi, so you are bearish. And on other side, when you are selling a put, so you are selling a mandi, so basically you are doing a teji, and that is on bullish side. Okay. But why I would not, buy a put instead of selling a call or vice versa? Yeah, I will comment that. So basically, when we buy an option, okay, when we buy an option, we are the buyer of an option, and for that we have to pay the premium. Okay, buyer of an option pays the premium, and seller of the option receives the premium. Okay, so obviously, as buyer of an option is only buying a premium, there is very low risk in that. And when we sell any option, there is very high risk because we are selling the option, and that option value can go in the infinite, right? It can increase like anything, either it's a call or put. So buyer of an option is having less risk, and seller of an option is having high risk. Very well explained. Now again, what we feel is buying a call option is low risky. So this is what happens with young generation, that they feel that okay, there is low risk in this, but it's not like that. When you are buying an option, you are paying the premium, so you are paying money in advance. Okay, before you are paying money in advance. Okay, so when we see as a business, जो बनिया होता है ना, वो पैसा लेता है, देता नहीं है. बराबर है. Is what we know, that जो बनिया होता है वो पैसा लेता है, देता नहीं है. So when we are buying an option, we are giving money. When we are selling the option, we are receiving money. But receiving money is a little bit risky. So we can use option strategies, different kind of option strategies to reduce that risk, so that the benefit from option selling, we can earn the benefit from option selling, and that can reduce the risk. And there are a lot of option strategies for that. But first, let us study the option, means why it happens. Okay, why it happens. Okay, so these are few terms which are used in option, that is strike price, spot price, premium, expiry date, lot size, and margins. So we will more focus on spot price, premium, and margins. So spot price is the price where currently index or particular underlying is trading. Okay, so suppose Nifty is trading at 19,500, that is your spot price. Okay, premium is intrinsic value plus extrinsic value. Okay, now what is intrinsic value? Intrinsic value means the value which is to be there in particular option, which is having some kind of value itself in that. Suppose Nifty is trading at 19,500, and Okay. if you are seeing a call of 19,200, so call means teji. Okay, and 19,200. So from 19,200 to 19,500, there is value of 300 rupees. Means market is already in bullish from that particular strike price. Okay, so that is called intrinsic value. So 19,200 minus 19,500, 300 point is intrinsic value for 19,200 call option. Okay, because we are seeing call option means teji, and already market is trading ahead of that. So तेजी already हो चुकी है, 300 पॉइंट की तेजी already हो गई है. So 300 rupees is intrinsic value plus extrinsic value. There are a lot of extrinsic value like volatility value, time value, and another thing, and that combination makes premium of particular option. Okay. So margin, again we come to margin. When we buy the option, we have to pay only the amount which we have traded, which the premium we have bought. Okay, so if we have bought a premium of 100 rupees, and suppose say Nifty lot size is of 50, so we have to pay only 5,000 rupees for that. Okay, that is 100 multiplied by 50.
there is only, so we need to pay 5,000 rupees as a margin. But when we sell the option, there is unlimited risk in there. So we need to pay full margin as per the future contract. Okay, so if we buy 19,500 call at 100 rupees and lot size is 50, we have to pay 5,000 rupees. But if we sell 19,500 call at 100 rupees, then we have to pay the premium. We will receive the premium, but we have to pay full margin, that is approx 1,25,000 or 1,50,000 as decided by exchanges. Okay, so these are the things. And because of this, people do not sell the option because it is a little bit risky also, and it demands lot of margin. So what the young generation feels that okay, there is limited risk in option buying, so 5-10 हजार रुपए लगा देते हैं, अगर मिल गया तो 50,000 मिल जाएगा. But they don't means they don't keep control on that, and they just keep on investing and keep on losing 5,000, 5,000, 5,000 each time. Okay, and obviously market will not continuously take your money. So in between, sometimes they will also be in profit. So again, they will feel that okay, this is very. Now I have mastered the technique. Now I have mastered the technique, and we can also earn from option buying. But sooner or later, as time goes, they will end up in loss. So these are the things that one should understand, the science behind options. Yeah. Please continue. And the science behind the option means that this another small slide which we can focus on. How option works is when we buy the call, it is unlimited profit, limited loss, but premium and margin is premium paid value. Okay, and limited loss is also premium paid value. When we sell the call, it is limited profit because we have received the money, but we have received limited money. Okay, and Right. that is what we have received. Premium we have received is our maximum profit, and loss is unlimited in there. Okay, again, when we buy the put, unlimited profit, limited loss, and when we sell the put, limited profit and limited loss. There is break even. So people need to understand this break even. This is most important thing. What the young generation do is they just buy the call where they only see premium, they don't see strike price. Okay, what they do that they just buy an option which is like Nifty lot size of 50. So ये option 10 रुपए में मिल रहा है. Okay, तो 10 रुपए में मिल रहा है तो कितना पैसा जाएगा? अरे 500 रुपए ही जा रहा है, तो 10 रुपए का ऑप्शन ले लो. बट दैट स्ट्राइक प्राइस इज टू फार, मतलब वो होने ही वाला नहीं है. Okay, and the probability of earning from that trade is only 1 to 2%. Okay, so people don't see that when we buy option, we have to consider the strike price. Okay, not only the premium, because the probability of profit is very low as you select the far strike. Okay, when you select the far strike, the probability of profit is very low. Okay, and if you select the current price, means what is called at the money or near price, near strike, the probability of profit is will rise. But obviously for that you have to pay some premium, because premiums are high in near strike price. But they should consider this. Okay, it's not like that 10 रुपए में मिल रहा है, कोई option तो ले लो, 10 का 100 हो जाएगा. It is not like that, because if it happens once, okay, I am sure that you will lose you will lose continuously till next 2-3 years. Okay, market will make you earn one time and take your money 100 times then. Okay. So this is the thing. And what we say, how option works, option totally depends on option Greeks. Okay, so people say that option trading is risky, option trading is difficult, but what I say is option trading is too easy, because it is a derived price from particular thing. मतलब ये एक ही चीज है
जो आपको पता है कि वहां कहां से कैलकुलेट होती है। मीन्स यू कैन नॉट जज निफ्टी, आप निफ्टी नहीं जज कर सकते हो कि निफ्टी कितनी होगी, राइट? यहाँ से 19,500 से 19,600 होगी या 19,400 होगी। वी कैन नॉट जज, वी कैन नॉट जज अ शेयर प्राइस, मतलब शेयर का प्राइस अभी ऊपर जाएगा अगली मिनट में या अगली मिनट में नीचे आएगा। वी कैन नॉट जज दैट। बट इन ऑप्शन it is a particular formula, okay, from where the option price are derived, okay। तो आप इसमें कंफर्म बता सकते हो कि अगर निफ्टी 19,500 है तो ये ऑप्शन की प्राइस यही होनी चाहिए, और अगर निफ्टी 19,400 है तो ऑप्शन की प्राइस यही होनी चाहिए, एंड दैट विल कम। सो दिस इज नोन थिंग। जो चीज आपको पता है उसको ट्रेड करना ज्यादा इजी हो जाता है, ओके। जो Okay. आपको पता है वो ट्रेड करना आपको ज्यादा इजी हो जाता है। Okay, so when you see if your Nifty is trading at 19,500 and if you have bought a call option, so you can easily calculate from option calculator that if Nifty comes to 19,400, what should be the premium, and if Nifty goes to 19,600, what should be the premium. You can easily calculate that. Everywhere option calculators are available. So if we are knowing that if Nifty will go to 19,600, this option will trade at this particular premium. So you can just book a profit at particular that time, or you can exit on lower side at particular point when you are seeing that okay, Nifty has broken the level or something like that. Or we can say that, calculating the risk reward ratio in options is easier than in equity. 100% true, 100%. Very good said, Vishal bhai. So calculating risk reward ratio is very easy in option rather than direct underlying. So when we see that when we understand option Greeks properly, you will be able to understand that how option trading is easy. Okay, but for that you have to study the option Greeks. Okay, so here are the 5 option Greeks, which is called, one is delta, another is gamma, another third one is theta, fourth one is vega, and the fifth one is rho. Okay, now what is delta? Delta is the strike price, okay, where we trade particular near the strike price to underlying price minus higher the premium or vice versa. So delta measures the movement of an option in combination to movement in underlying price. Okay, delta measures moving of option premium in contest to moving an underlying price. So underlying price अगर इतनी बढ़ेगी तो ये ऑप्शन पर्टिकुलर कितना बढ़ेगा वो डिसाइड करता है डेल्टा। ओके, और जितनी नजदीक स्ट्राइक प्राइस होती है उतना उसका डेल्टा हाई होता है और प्रीमियम भी हाई होता है, और जितनी स्ट्राइक प्राइस दूर जाती है उसका डेल्टा उतना कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, राइट। Another is gamma. Gamma is little bit complicated to understand because it directly वो option premium को effect नहीं करता है. Gamma is a indicator which shows that how much delta will move. मतलब डेल्टा कितना मूव करेगा मार्केट के मूवमेंट के साथ वो डिसाइड करता है गामा. Gamma is little bit difficult to understand, so that will take lot of time. But if someone needs to understand, they can directly contact me because it will take time to understand gamma. Okay. So another one is theta, which is time value. Time value means as we know that जो भी ऑप्शन होता है या कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट होती है वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट में पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट होती है. ओके, एंड थीटा इज टाइम वैल्यू, मतलब जितने टाइम का वो पर्टिकुलर ऑप्शन है या कोई भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उतनी उसमें टाइम वैल्यू रहेगी. मतलब जैसे 1 महीने का अगर कोई ऑप्शन है तो उसमें 1 महीने की टाइम वैल्यू रहती है, अगर कोई वीकली ऑप्शन है तो उसमें 1 वीक की टाइम वैल्यू रहती है, और जैसे जैसे टाइम जाता है ये टाइम वैल्यू धीरे धीरे नीचे आती जाती है. ठीक है. वेगा इज वॉलेटिलिटी, मतलब जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो वॉलेटिलिटी का प्रीमियम मतलब वेगा हाई होता है,
और जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी लो हो जाती है तो वेगा का प्रीमियम, मतलब वेगा कम्स डाउन एंड उसका प्रीमियम, कोई ऑप्शन का प्रीमियम लो हो जाता है। सो कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्शन बाय तो कर लेते हैं, पर वो ऑप्शन ऊपर ही नहीं जा रहा है बिकॉज मार्केट मूवमेंट बंद कर देता है, और जो वॉलेटिलिटी का जो प्रीमियम है वो स्टेगनेंट हो जाता है। ओके, एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि हमने कोई ऑप्शन अगर लिया हुआ है और मार्केट वहीं का वहीं है, पर कोई भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में या कोई भी पर्टिकुलर अंडरलाइंग में या कोई स्टॉक में कोई मूवमेंट आती है और वॉलेटिलिटी ऊपर आती है तो भी प्रीमियम बढ़ जाता है। मार्केट ओके हिला भी नहीं है, मार्केट ने मूवमेंट भी नहीं की है, पर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है सभी स्टॉक्स में, तो वॉलेटिलिटी का प्रीमियम हाई हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड वेगा। एंड रो इज इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है ऑप्शन प्राइसिंग को, बिकॉज ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे रेगुलर बेस पे नहीं होते हैं। सो दीज आर द 5 ग्रीक्स ऑन विच ऑप्शन प्राइसिंग आर कैलकुलेटेड। ओके, और वो वही पर्टिकुलर रहेगा। एंड दिस इज ब्लैक शॉल्स मॉडल। ब्लैक एंड शॉल्स दोनों मैथमेटिशियन थे, तो उन दोनों ने ये एक फॉर्मूला डिराइव की थी जिसके ऊपर हम अपनी ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, एंड इन इंडियन मार्केट ऑप्शन प्राइसिंग इज कैलकुलेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, एंड ये स्पेसिफाइड है और ये यही रहेगा, इसी के हिसाब से ओके ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट होता है। और हाँ, मतलब थोड़ा बहुत 50 पैसा 1 रुपी का वेरिएशन आता है बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, बट इसके आजू बाजू ही प्रीमियम ट्रेड करता है बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम ए फॉर्मूला एंड इट विल वर्क लाइक दैट ओनली। ओके। सो दिस इज द ऑप्शन, होप ये आपको थोड़ा ऑप्शन का फंडा क्लियर हो गया। कुछ कोई एग्जांपल देके आप थोड़ा बता पाएंगे कि भाई अभी ये ऑप्शन चल रहा है या ये इसमें ये रिस्क रिवॉर्ड है, या समथिंग लाइक दैट, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो। जैसे हम कोई स्टॉक के चार्ट के बेस पे एग्जांपल देते हैं, वैसा कुछ एग्जांपल देके आप बता पाएंगे हाउ वॉलेटिलिटी इफेक्टेड, और या ग्रीक्स कैसे काम करते हैं, यस, या इट डेफिनेटली। विल टेक लॉट ऑफ टाइम। एक स्मॉल एग्जांपल। एक स्मॉल एग्जांपल ले लेते हैं रिगार्डिंग निफ्टी। पिछले अगर आप 3 वीक या 4 वीक अगर आप देखोगे, सो निफ्टी डज द मूवमेंट, निफ्टी स्टार्टिंग में जब वीक चालू होता है ऑन फ्राइडे, फ्राइडे से लेके वेडनेसडे तक निफ्टी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं करती है। निफ्टी इट ट्रेड्स इन स्मॉल रेंज, बट ऑन थर्सडे इटसेल्फ इट स्टार्ट्स मूविंग। ओके, वो एकदम से मूवमेंट हो आ जाती है उसमें। सो जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ देखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड ऐसा होता है कि लास्ट तक में, लास्ट डे इवन, जैसे हम डेल्टा की बात करें तो स्टार्टिंग में जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसका थीटा जो है वो हाई होता है, तो ऑप्शन प्रीमियम एकदम से डिटोरिएट नहीं होते हैं। और जब ऑप्शन प्रीमियम थ्रू थीटा डिटोरिएट होने का टाइम आता है तभी डेल्टा मूवमेंट करने लगता है। ओके, ओके एकदम से मार्केट में मूवमेंट आ गई तो क्या हुआ कि अभी तक हम, मार्केट स्टेगनेंट था तो हमें हम थीटा रिसीव कर रहे थे। ओके, एंड सडनली जब ज्यादा थीटा रिसीव करने का टाइम आया तो डेल्टा हमारी फेवर से निकल गया। ओके, सो व्हेन यू मेक ऑप्शन स्ट्रेटेजी, वो आपको स्टार्टिंग में भी इतना प्रॉफिट नहीं दिखाता है और एंड में भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं दिखाता है। ओके, सडनली लास्ट डे को क्या होता है कि लास्ट डे को अभी जो ऑप्शन बायर है पर्टिकुलर, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट यंग जनरेशन, ऑप्शन बायर है ना, वो थर्सडे को अभी आप देखोगे कि लास्ट 2 या 3 वीक से ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग में जब दिन स्टार्ट होता है, ओके, ऑन थर्सडे मॉर्निंग देर इज लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। सो वॉलेटिलिटी का प्रीमियम बहुत हाई होता है और लोग उधर बाय करते हैं, और एकदम से लास्ट में वॉलेटिलिटी का प्रीमियम एकदम लो हो जाता है। ओके, और वो आपको निकलने का चांस ही नहीं देता है, एंड सडनली प्रीमियम फॉल्स बाय 50-60% इमीडिएटली आफ्टर 3 o'clock। जैसे 3 बजते हैं या 3 बज के 5 मिनट होती है तो सीधा प्रीमियम सीधा 50-50% नीचे आ जाता है। सो वो आपको सोचने का टाइम नहीं देता है। सो दिस इज हाउ ग्रीक वर्क्स, मतलब वो ग्रीक को समझना बहुत ही जरूरी है जब भी आप पर्टिकुलर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, कि अभी इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो मुझे ये प्रीमियम बाय नहीं करना है, मुझे ये प्रीमियम सेल करना है।
तो सेल करना है तो उसको सेल करके अनलिमिटेड रिस्क जो आता है उसको हेज कैसे करना है. So Very well explained. Yes, please continue. देर इज लाइक अनदर, ये जो ऑप्शन है बेसिकली बहुत सारे लोगों को ऑप्शन जो है ना, बेसिकली दैट ऑप्शंस आर नॉट मेड फॉर ट्रेडिंग, दे आर मेड फॉर हेजिंग. ओके, वो हेजिंग करने के लिए प्रोडक्ट बनी हुई है. सो Please explain. हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट जिस हिसाब से यूज होती है ना, उसी हिसाब से हम यूज कर सकते हैं. Okay, हम कपड़े धोने के साबुन से नहा नहीं सकते हैं, उससे कपड़े ही धुलते हैं, राइट. और right, अगर हम नहाने के साबुन से कपड़े धोएंगे तो कपड़े क्लीन नहीं होंगे. correct. तो जो प्रोडक्ट जिस चीज के लिए बनी है, ओके, आप उसको ऐसे ही यूटिलाइज करो और उसको प्रॉपर स्टडी करके करोगे तो डेफिनेटली यू विल अर्न वेरी हैंडसम मनी, यू विल क्रिएट वेल्थ फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग. वेरी वेल एक्सप्लेन सर. और मैं हमारे दर्शक जो हैं, पीपल हु आर व्यूइंग दिस, उनको बताना चाहता हूं कि अभिजीत भाई had agreed has agreed in fact to collaborate with Happy Candles for training people who are interested in options, derivatives, futures, ये सब derivatives के जो भी प्रोडक्ट हैं. We can also include currencies in that, which will be our next topic for discussion. So Abhijit Bhai is ready to give us training on this subject. So those who are interested, those who are viewing this and who are interested in learning more about options, as you understood here that it is pure science, you need to learn. Without learning, the chances are that you are going to make lot of mistakes. बहुत बड़ी गलती होंगी और आप आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर लेंगे. तो थोड़ा सा सीख लो, थोड़े घंटे स्पेंड करो हमारे साथ, प्रोबेबली 8 घंटे या 10 घंटे, or you will become very, I am not saying that you will become very good experts, but you will become a very good defensive player where you will be able to save your money, and ultimately if you are able to save your money, you will make your money today or tomorrow. So I welcome everyone who are interested in learning about options from Abhijit Bhai. You contact us and we will take care, and we will make sure to grab Abhijit Bhai and help us learn that. Definitely. Now coming to currencies, sir. Yeah. So Is currency a way of making money? Is it a way of investment, or it is a product that can be traded and we can make money of it? How to use the currency market in our favor? okay. So currency market, we can use this currency market in each and every way. आपने जितना भी बोला वो हर एक जगह पे currency market as a investment product, as an trading product, as an wealth creation product. Because अच्छा, करेंसी में बहुत सारे लोगों को थोड़ा वो ये होता है कि करेंसी मतलब क्रिप्टो करेंसी. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, Right. नॉट इनटू दैट. ओके, वी डॉलर, येन, युआन, वी यूरो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. यस, and that is also on exchange platform, on our exchange platform, national stock exchange, not Correct. on another international platform which we are talking. बहुत सारे करेंसी ट्रेड करने के लिए बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, बट दे आर क्वाइट रिस्की. और वहां पे क्या होता है, कैसे होता है, उनकी सिस्टम क्या है, वी डोंट नो. वहां पे काफी सारी मतलब वो इसकी गाइडलाइन भी होती है, लॉन्ड्रिंग मनी की गाइडलाइन होती है, तो बहुत सारा कुछ होता है, तो दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. So तो हम सबसे पहली बात, let us make it clear for the audience that we are talking about, again we will make it clear that we are talking about trading in currencies, as in the currency of different countries available on NSE and BSE platform only. yes, yes, which is totally legal in India. Okay. Okay, so on NSE platform, there are few currency pairs which are traded. One is USD INR, another is GBP INR, third is Euro INR, and Yen and INR, JPY INR. Okay, another cross currency pair which we are trading is USD GBP, USD Euro,
USD JPY. Okay, these are the cross currency. So this 7 type of currency pair we are trading in India, and we'll Only. concentrate on this only. And Okay. most probably we will talk about USD INR majorly, Okay. because we also have an options in particular USD INR. We are having options in each and every currency pair, but options in the USD INR are most liquid and most active. Okay. Okay, now currency market is totally untouched market right now. Wow. No one are aware of currency market. People know very less things around about currency market. Once there was a time where people used to trade currency, but after then, at that time it was little bit risky also, because there were Okay. no clarity about currency. There were no social media where you can have a knowledge, because when we are trading a currency, we have to study international things. ओके, तो पहले क्या होता था कि करेंसी में बड़ी मूवमेंट आ जाती थी, जो हमें दूसरे दिन पेपर में पता नहीं पढ़ने चलता था क्यों हुआ ये, कि भाई कैसे। यूएस ने कहीं पे किसी पे बॉम्ब फेंक दिया, या या कहीं दो यूएस के एलाइज आपस में भिड़ गए, यस या समथिंग लाइक दैट, इंटरनेशनल फैक्टर्स. यस सो एट दैट टाइम इट वाज डिफिकल्ट टू ट्रेड, बट राइट नाउ करेंसी ट्रेडिंग इज मेड टू इजी. एंड काफी वेरी साइंटिफिक ऑल्सो. Yes, very scientific. And even there are options, and there are weekly options over there. वहां पे भी weekly options available है USD INR में. And बहुत ही लो मार्जिन के साथ हम इसको ट्रेड कर सकते हैं. जैसे कोई भी एक लॉट अगर हमें USD INR पेयर का ट्रेड करना है, तो वी नीड ओनली 2000 रुपीज. ओके. एंड वन लॉट कंसिस्ट ऑफ 1000 USD. ओके, तो बेसिकली बहुत ही छोटी अमाउंट में हम बड़ा ट्रेड कर सकते हैं. ओके, एंड करेंसी इज लो वॉलेटाइल देन इक्विटी. ओके, तो उसको जज करना भी बहुत इजी हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी. इक्विटी में ओवरनाइट मूवमेंट भी बहुत ज्यादा आती है, लाइव मूवमेंट भी बहुत ज्यादा आती है. करेंसी में ये मूवमेंट इतनी मतलब थोड़ी कंजर्वेटिव होती है कंपेयर टू इक्विटी. नॉट टोटली कंजर्वेटिव, रिस्क तो उसमें भी है, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली बायर सेलर जहां पे है वहां पे रिस्क होगा ही होगा, बट इट इज लेस रिस्की देन इक्विटी मार्केट. एंड इट इज अनटच मार्केट. यहाँ पे ज्यादा किसी को अभी कुछ पता नहीं है. ओके, करेंसी कैसे ट्रेड होती है पता नहीं है. तो जहां पे भीड़ कम होती है, वहां पे इनकम ज्यादा होती है. ओके, करेक्ट. बिकॉज वंस अ पॉइंट, जब मैं 2010 में जब मैं ऑप्शन स्टडी कर रहा था, एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑप्शन प्रीमियम्स वे टू हाई, मतलब 3% 4% यील्ड आ रही थी उसमें. Okay, and right now that yield has gone to around 1% to 1.25%. Okay, so once people will start trading, more and more people will come, lesser the chances of profit will be there. Okay, so करेंसी में अभी लोगों को ज्यादा कुछ इतना पता नहीं है, करेंसी कम लोग ट्रेड करते हैं. ओके, सो करेंसी में अभी बहुत ही लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज है. इसमें भी मतलब और बहुत कम मार्जिन में यू हैव मतलब बहुत कम मार्जिन में ट्रेड हो जाता है. इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत कम रहती है. ओके, सो दिस इज व्हाट करेंसी इज विच वी आर टॉकिंग. एंड पर्टिकुलर USD INR पेयर 1000 का लॉट होता है. उसमें 1000 USD का लॉट होता है. वन लॉट का प्रीमियम अराउंड 2000 होता है. उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल है. और ऑप्शन का जो प्रीमियम कैलकुलेशन है, वो हर एक जगह पे सेम रहता है. आइदर इट इज कॉमोडिटी, आइदर इट इज करेंसी, आइदर इट इज इक्विटी, ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेशंस आर सेम. तो अगर आपको ऑप्शन के ग्रीक समझ में आ गए या ऑप्शन प्रीमियम का कैलकुलेशन समझ में आ गया, तो दिस स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई ईच एंड एवरीवेयर, इन इक्विटी, इन कॉमोडिटी, इन करेंसी, एवरीवेयर. ओके, सो एक बार अगर आप ऑप्शन सीख गए, तो आप कहीं से भी वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना के आप पैसा बना सकते हो. सो राइट नाउ जैसे अभी हम देखें कि USD INR इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई अगेंस्ट रूपी. इट्स ऑलमोस्ट अबाउ 83 राइट नाउ. ओके, सो ऑलरेडी USD INR जो है वो बहुत बढ़ गया है. एंड इफ यू सी के USD INR की पिछले हिस्टोरिकल जो डेटा है,
तो ईयरली मूवमेंट उसकी अराउंड $3 की होती है. मतलब वी कैन से दैट फ्रॉम पास्ट 15 years या 20 years डेटा वी कैन आइडेंटिफाई दैट ईच ईयर डॉलर एप्रिशिएट अगेंस्ट रूपी अराउंड $3. मतलब अभी 83 चल रहा है, तो ये साल के एंड में 86 तक जाएगा. बट इफ यू सी इन लास्ट 2 years it has already gone from ₹70 to ₹83. करेक्ट. ऑलरेडी जो एवरेज ग्रोथ है यूएसडी का, उससे ज्यादा यूएसडी ऑलरेडी अभी अप्रिशिएट हो गया है रूपी के अगेंस्ट में. एंड आवर इकोनॉमी इज ऑल्सो, एज वी नो दैट इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी गुड, एंड अभी हमारी इकोनॉमी भी ऊपर आ रही है. सो देर आर लॉट ऑफ चांसेस के अभी यहाँ से आगे जाके अगले 2-3 साल में यूएसडी आईएनआर कोई ऊपर की साइड वाइड मूवमेंट नहीं करना चाहिए. ओके, सो रूपी विल गेट स्ट्रॉन्ग, रूपी विल अप्रिशिएट. अभी मतलब इन कंपैरिजन ऑफ एवरेज, नॉट अभी यूएसडी के सामने अभी अप्रिशिएट होने में अभी बहुत देर है, बट जो एवरेज है वो एवरेज जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 4-5 years एटलीस्ट. सो देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि इसकी रेंज आप आराम से गैस कर सकते हो कि आपको जो बेसिकली आप निफ्टी गैस नहीं कर सकते हो. अभी निफ्टी में दिक्कत क्या आती है कि निफ्टी 19,500 से 16,000 हो जाएगी या 21,000 हो जाएगी, तो ये रेंज गैस करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, बट इन करेंसी यहाँ पे आप रेंज जो है वो इजीली, मतलब थोड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. एंड अगेन आई टेल यू, जो आपको आइडेंटिफिकेशन या जो आपको नोन चीज है उसको ट्रेड करने में आपको डर भी कम लगता है, और आप उसमें से पैसा भी अच्छा खासा बना सकते हो. ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन सर, गुड पॉइंट. नाउ कमिंग टू निफ्टी, जो आपने बोला कि भाई 16,000 से 19,000 या 21,000, तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट निफ्टी, वेयर वी एज इंडिया आर गोइंग इन द नेक्स्ट 5 years? ओके, मैंने है ना बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी किया हुआ है. पिछला अगर हिस्टोरिकल डेटा आप देखोगे निफ्टी का, ओके, ऑफ अराउंड 25-30 years, तो मैंने है ना एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो इंटरनेशनल इवेंट्स है जिसके जो इफेक्ट करता है इक्विटी मार्केट को, उसका और निफ्टी का अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे, सो व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड इज ईच एंड एवरी 8 to 10 years एक बड़ी मंदी आती है. देयर इज अ रिसेशन पीरियड at each and every 8 to 10 years of interval. Okay, and we have just seen COVID-19 in 2019. Okay, so for next at least we have just passed 4 years from 5 years from that, and what I see is for another 5 years Nifty is not going to fall anywhere. Okay. There are means छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे which are very healthy, which are said to be healthy, बिकॉज अगर सिंगल साइड मूवमेंट आएगी और निफ्टी सिर्फ कंटिन्यूअस राइज होती रहेगी तो कोई पैसा नहीं बना पाएगा. करेक्ट, बिकॉज उसमें मूवमेंट आनी, ऊपर नीचे होना जरूरी है, जो मार्केट का नेचर है. मार्केट अपना नेचर फॉलो करेगा ही करेगा. सो एट ईच एंड एवरी इंटरवल देयर वुड बी करेक्शंस अराउंड फॉर 5 to 10% करेक्शंस बीच में आते रहेंगे. बट नेक्स्ट 5 years आई एम वेरी मच बुलिश ऑन इंडियन मार्केट, and Nifty can go around 28-30,000 in next 5 years. This is what I feel. great. Any particular sectors we are looking at जिसमें आप ज्यादा bullish हो in Nifty? Yes, there Would are. like to share something या फिर हम presentation बंद कर दें तो? हाँ, fine. We presentation हम बंद कर देते. Just a second. Let's go through the things. Okay, ये स्लाइड में रखता हूँ ओपन, हम डिस्कस कर दें. Yes. So the thing is there are 2-3 sectors, actually 3 sectors which I will prefer to invest in for next 5 to 10 years. As government policies are changing and government is focusing on defense sector right now. तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ से मुझे बहुत बुलिश लग रहा है. ओके, बिकॉज गवर्नमेंट इज focusing very high on the defense product export. Okay, so one defense sector is very good. Okay,
अनदर इज सोलर पावर। ओके, सोलर इंडस्ट्रीज भी अभी काफी यहाँ से ऊपर आ रही है। यहाँ से नेक्स्ट 5 years में सोलर इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो होगी, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी जनरेशन। तो वहां पे भी बहुत सारी मतलब सब्सिडीज वगैरह अभी गवर्नमेंट दे रही है, एंड दे वांट टू क्रिएट ग्रीन एनवायरनमेंट, एंड उनका टारगेट भी है ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। सो एक सोलर सेक्टर है जो यहाँ से बहुत बुलिश लग रहा है। एंड अनदर वन इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बुलिश नहीं लग रहा है, बट वो अंडर वैल्यूड लग रहा है अभी। ओके, बिकॉज एज यू सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग राइट नाउ। तो अभी इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से आईटी स्टॉक्स डाउन है सब। ओके, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ नॉइज इन इंटरनेशनल मार्केट। रशिया यूक्रेन अभी चल रहा है, उसका कुछ अभी हुआ नहीं है। यूएस में अभी बॉन्ड यील्ड्स वगैरह बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं। यूएस में अभी इंटरेस्ट रेट स्टेबल नहीं हो रहे हैं। सो वंस दिस ऑल विल गो, ओके, आईटी सेक्टर यहाँ से वो बूम कर जाएगा, बिकॉज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ही पीक पे है। बहुत ही टेक्नोलॉजी अभी आप देखोगे पिछले 2-3 साल में टेक्नोलॉजी हैज लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इटसेल्फ। बहुत कुछ बदला है, और आगे जाके भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नया आएगा रिलेटेड टू आईटी सेक्टर। सो हमारी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज विच दे आर सर्विंग फॉर आउटसाइड कंट्रीज, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो काम कर रहे हैं, सो उनको ये हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना या उनकी सर्विसेज लेना, वो बहुत ही रीजनेबल रेट पे उनको हमारी सर्विस मिलती है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि हमारी जो आईटी कंपनीज है वो आगे जाके वो भी यहाँ से अच्छा ग्रो करेगी। एंड अभी वैल्यूएशन जो है आईटी में वो काफी लो है, एंड सूनर और लेटर इट विल कैच द मार्केट। और यहाँ से वो सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर वैल्यूड है, तो इसको लेना चाहिए। ओके, नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ब्यूटीफुल स्लाइड में इधर देख रहा हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन कीजिए। सो अगेन कार्डिनल रूल्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, इतने रूल अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप ऑप्शन में कभी भी पैसा नहीं गवाओगे। और आप जो भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसमें से आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे इजीली, आप अपना पोर्टफोलियो भी हेज कर पाओगे प्रॉपरली। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन टर्मिनोलॉजी। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आता है, सिर्फ प्रीमियम को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, तो मत कीजिए, बिकॉज ऑप्शन इज easiest way again, okay, to earn hard money। तो बहुत इजी है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वी ओनली सी प्रीमियम के प्रीमियम सस्ता है या महंगा है, बस वही देखते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऑप्शन इज पर्टिकुलरली कैलकुलेटेड, और एक कहीं से डिराइव हुआ हुआ है, उसकी फॉर्मूला भी है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो आप उसको समझिए पहले और उसके बाद ट्रेड कीजिए। अंडरस्टैंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी परफेक्टली। अभी जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो या कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी अगर आप सिलेक्ट करते हो ट्रेड करने के लिए, तो पर्टिकुलर वो स्ट्रेटेजी है वो भी समझिए। ऐसा नहीं किसी ने बताया कि बुल स्प्रेड ट्रेड कर लो या बटरफ्लाई ट्रेड कर लो या कॉलर ट्रेड कर लो तो कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आप वो समझिए स्ट्रेटेजी क्यों है, किसके लिए बनी है। ओके, मार्केट बुलिश लग रहा है इसलिए आप ट्रेड कर रहे हो, मार्केट बेरिश लग रहा है इसलिए ट्रेड कर रहे हो, मार्केट साइडवेज लग रहा है इसके लिए ट्रेड कर रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेटेजी परफेक्टली फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट। डू योर होमवर्क। आप अपना होमवर्क कीजिए, रोज स्ट्रेटेजी बना ली है आपने, दैट इज फाइन, बट उसको आप रोज चेक कीजिए कि वो कहाँ जा रही है, उसमें प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, डेली मार्केट मूवमेंट के साथ उसमें प्रॉफिट लॉस क्या होता है। यू हैव टू डू योर होमवर्क एक्चुअली। चेक योर ट्रेड ट्वाइस आफ्टर डिप्लॉइंग स्ट्रेटेजी। कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं पर हमने रॉन्ग ऑप्शन ट्रेड कर लिया होता है। सो जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, बिकॉज कोई भी स्ट्रेटेजी अगर एक भी अगर आपने ऑप्शन गलत ट्रेड कर लिया तो यू कैन एंड अप इन अनलिमिटेड लॉस, राइट। सो आप जब भी अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी आप बनाते हो तो आप उसको 2 बार चेक कीजिए बनाने के बाद। ओके, क्लोज योर ऑल ट्रेड विदाउट फेल एट फेयर वैल्यू एट क्लोजिंग ऑफ द वीक या क्लोजिंग ऑफ द मंथ बेसिकली। जब भी एक्सपायरी आती है, तो अभी जैसे आपको पता है कि स्टॉक में फिजिकल सेटलमेंट का रूल आ गया है।
ओके, सो यू नीड टू मेक इट श्योर कि जब भी आप अपना कोई भी ऑप्शन ट्रेड किया है अगर आपने, तो एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक आप उसको क्लोज करो। आप उसको उसको खुला मत छोड़ दो, मतलब विदाउट ट्रेडेड मत छोड़ दो, बिकॉज फिजिकल डिलीवरी लेनी या देनी पड़ेगी स्टॉक में। ओके, ड्यू टू दिस रीजन ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब हर्ट करता है। अगर फिजिकल डिलीवरी का अगर आपको देनी पड़ी तो आपके पास डिलीवरी तो है नहीं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रूल। अभी सेबी ने जो नया रूल एक्सचेंज ने डाला है, तो उसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि आपको फेयर वैल्यू जो भी है ऑप्शन की, लास्ट में वहां पे आपको ट्रेड करके उसको क्लोज करना है ट्रेड, उसको आपको खुला नहीं छोड़ देना है। ट्रस्ट योर स्ट्रेटेजी एंड फॉलो स्ट्रिक्टली। आपने जब स्टडी किया है, होमवर्क किया है, आप कोई स्ट्रेटेजी आपने समझ ली है परफेक्टली कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ऐसे ही काम कर रही है और ये बराबर है मेरी स्ट्रेटेजी, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट रखिए, उसको टाइम दीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। उसको बार बार चेंज करने की या यहाँ से वहां स्ट्रेटेजी चेंज करने की या यहाँ से वहां ऑप्शन लेग वापस से चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा उसको टाइम दीजिए, क्योंकि आप स्टडी करके कर रहे हो, तो थोड़ा वो स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस रखिए, वो आपको पैसा देके जाएगी। Okay, believe in compounding. Okay, again, Rome is not built in one day, right? We all know that. तो एकदम से पैसा नहीं बनता है। कंपाउंडिंग को ट्रस्ट कीजिए, धीरे धीरे करके पैसा बनेगा, वो पैसा कंपाउंड होगा, कंपाउंडिंग की इफेक्ट आएगी। अभी आप एक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, अभी आप एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, उसके बाद जैसे जैसे पैसा बनता जाएगा तो वही पैसा पैसे को खींचेगा और आप एक से दूसरी और दूसरी से 10 और 10 से 100 स्ट्रेटेजी पे आप मूव हो पाओगे। एंड वंस यू स्टार्ट दैट जर्नी, तो मनी विल स्टार्ट कंपाउंडिंग। ओके, सो इट विल टेक टाइम। कंपाउंडिंग पे भरोसा रखिए और थोड़ा मतलब पेशेंस रख के आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, कंपाउंडिंग की इफेक्ट आएगी ही आएगी। सो बिलीव इन कंपाउंडिंग। ओके, फास्ट पैसा बनाने के लिए मत दौड़िए। डू नॉट ट्राई टू जज द मार्केट। मार्केट जज करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है कि मार्केट जो कर रहा है उसको मैनेज कैसे करें। राइट, व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे इवन टेक्निकल में भी अगर हम देखें, तो टेक्निकल में भी क्या होता है, वी हैव टू फॉलो स्टॉप लॉसेस, राइट। वी नीड टू फाइंड सपोर्ट, वी नीड टू फाइंड रेजिस्टेंस। तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसको आप मूवमेंट गेस नहीं कर सकते। आपको मार्केट को ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं कि नहीं नहीं ये सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, ये सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा मार्केट, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा मार्केट। अभी वहां पे आपको मार्केट को जज नहीं करना है कि नहीं नहीं इसके बाद का सपोर्ट नहीं टूटेगा। व्हाट पीपल मेक मिस्टेक इज, नहीं नहीं ये सपोर्ट भले तोड़ दिया पर इसके बाद का नहीं टूटेगा। सो डोंट जज द मार्केट। मार्केट ऐसे जजमेंट से नहीं चलता। फॉलो योर स्ट्रेटेजी। Market can remain irrational more than investor can remain rational. ट्रू 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 ट्रू, डेफिनेटली डन। सो अनदर इज नेवर मेक एन ओवर लिवरेज पोजीशन। जितना पैसा है उतना ही लगाइए, उतना ही ट्रेड कीजिए, बाकी कंपाउंडिंग पे छोड़ दीजिए, पैसा बनेगा धीरे धीरे। अगर एक बार आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो गई, मतलब एक दो वीक अगर आपको पैसे मिल गए, तो ज्यादा पैसे बाहर से लाके या ऐसा कुछ करके, लोग ऐसा भी करते हैं कि बाहर से लाके भी पैसा इसमें डालते हैं और दे एंड अप इन लॉस। सो ओवर लिवरेज पोजीशन हमें कभी भी नहीं बनानी है। फिर नेवर मेक योर हेड स्ट्रेटेजी ओपन। आपने अगर कोई हेड स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, ओके, तो उसको कभी भी आप ओपन मत कीजिए, बिकॉज वंस यू ओपन योर हेड स्ट्रेटेजी इट कैन एंड अप इन अनलिमिटेड लॉस। ओके, सो हेड स्ट्रेटेजी है उसको हेज रहने दीजिए। एक्सपायरी आएगी, आपको पैसा, आपका प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर आप उसको ओपन करके मार्केट को जज करने की ट्राई मत कीजिए। Can you elaborate on this? या लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, ओके, से आई हैव मेड बटरफ्लाई, मैंने बटर या बुल स्प्रेड बनाया है मैंने। सो इफ आई हैव मेड अ बुल स्प्रेड, वो मेरा सही भी जा रहा है, बट फिर क्या जज करते हैं कि जो ऑप्शन बढ़ गया है, जो लेग बढ़ गया है, उसको मैं बेच देता हूँ। जो मैंने बेचा है ना, वो वापस मार्केट नीचे आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जो लिया हुआ लेग है वो उसको बेच देते हैं, और जो सेलिंग लेग है उसको खड़ा रखते हैं, और वो वहीं से फिर वो मार्केट शूट अप हो जाता है, दे एंड अप इन ह्यूज लॉस। सो अगर हेड स्ट्रेटेजी है
तो अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप दोनों लेग एक साथ में ही स्क्वायर ऑफ कीजिए, वो हेज ओके स्ट्रेटेजी को खुला मत कीजिए। ओके। डू नॉट मेक अननेसेसरी एडजस्टमेंट। जो हमारी एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो एडजस्टमेंट्स तभी करने हैं जब जरूरत होती है। जरूरत नहीं है फिर भी एडजस्टमेंट कर रहे हो क्योंकि और प्रॉफिट लेना है और प्रॉफिट लेना है और प्रॉफिट लेना है, सो ऐसे प्रॉफिट नहीं बनता है। अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिए। ओके। सो दिस वाज द ऑप्शंस विच आई वांट टू से। मैंने जितना भी होप मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। एंड काफी कुछ, काफी सिंपल लैंग्वेज में सर आपने एक्सप्लेन किया। वी थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। And what I would like you to tell by the end of this show, while we are coming, we'll open it for Q&A for a few minutes after this. But any four or five stocks in particular which you would like to say have a good future potential to grow. We don't need to give any levels or anything, just discussion for educational purpose. कोई 5 स्टॉक ऐसे हों जो आप खुद इन्वेस्टेड हो, आपको लग रहा है कि उसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है, ऐसा अगर आप बताना चाहें फॉर आवर ऑडियंस राइट नाउ एंड फॉर दोज हु विल बी वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब। यस, सो बेसिकली 5 स्टॉक है जो मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने भी उधर इन्वेस्ट किया है, और विच आई सपोज पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स ही है। वन इज टीसीएस, एज आई सेड के वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। वंस इट विल स्टार्ट राइजिंग, जब भी ये थोड़े इंटरनेशनल इवेंट्स थोड़े कम होंगे या इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थोड़े सॉल्व होंगे, तो आईटी विल पिक अप एंड टीसीएस द बिगेस्ट इंडियन आईटी कंपनी। सो टीसीएस एक है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड इज सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज थोड़ा मतलब ऑफ भी बीट। 4100 200 के ऊपर है मेरे ख्याल से। 4200 300 है, बट अगेन फैंटास्टिक वैल्यूएशन ओवर देयर। काफी इंटरेस्टिंग काम करती है कंपनी, एक्सप्लोसिव और उसमें है। एंड एज डिफेंस सेक्टर भी अभी काफी कुछ आगे कर सकता है। वहां पे ओके मैंने जैसे सेक्टर वाइज आपको स्कोप बताया, तो उधर सोलर इंडस्ट्रीज है। फिर अगेन टाटा मोटर है। टाटा मोटर यहाँ से एटलीस्ट काफी सारा मतलब आप देखोगे टाटा मोटर हैज अगेन टर्न इनटू प्रॉफिट राइट नाउ। एंड इंडियन मार्केट में जो टाटा की कार्स का चार्म चला गया था, वंस देयर वाज ए इंडिका विच वाज हॉट फेवरेट ऑफ इंडियन पीपल, उसके बाद जो टाटा का थोड़ा फोकस जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। बट अगेन दे हैव कम अप विथ वेरी गुड मॉडल्स इन इंडिया। और पेट्रोल व्हीकल में भी वो काफी अभी अच्छा कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो फ्यूचर अभी ऐसा लग रहा है कि ईवी विल बी द फ्यूचर फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल, तो वहां पे भी उनका मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है। सो टाटा मोटर इज अनदर स्टॉक। थर्ड इज फोर्थ इज रिलायंस। रिलायंस, दिस इज व्हाट आई फील के इन रिलायंस तो होना ही चाहिए हमारे पास वाला बिगेस्ट इंडियन कंपनी, ओके, विथ बिगेस्ट मार्केट कैप, सॉरी। सो again they have always make shareholders earn। उन्होंने सबको, हर शेयर होल्डर को पैसा बना के दिया है। सो आई ट्रस्ट द प्रमोटर्स। एंड बहुत ही अच्छी कंपनी है। रिलायंस एक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज टाटा पावर। अगेन सोलर थीम है। सोलर थीम ओके। में टाटा पावर इज अगेन टाटा ग्रुप है, ग्रुप अच्छा है, ह्यूज कंपनी। और सोलर पैनल में भी अगर आप अभी देखो तो सोलर पैनल जितनी भी जाती है उसमें टाटा पावर का मार्केट शेयर बहुत बढ़िया है। Okay. So again, Tata Power. So these are the 5 stocks which I would keep in my portfolio for next 5 to 10 years. Thank you very much, Abhijit Bhai. It was a pleasure talking to you. And now, if anybody has any question, you can unmute yourself and ask the question. We have another 2 3 minutes. We can take 2 3 questions if you have any.
So I think people have fully understood, and they don't have any questions right now. So I think we can end the show over here. We'll wait another 1 minute to know if there is any question. You can also type the question in the chat box if you are not able to speak. We will wait for 1 minute and then we will end the video. Thank you very much, Abhijit Bhai. Thank you. Meanwhile, gratitude to you for coming, and it is always great to talk to you. We learned a lot about options, about currency market, about the sectors that are going to go forward, about do's and don'ts of option tradings. So it was really wonderful talking to you. If anybody has any question later, they can send it in our group or they can send it to me personally. You already have Abhijit Bhai's number. He had shared it in the video. तो आप उनको डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं. Thank you, Abhijit Bhai, and I hope that we will again have you very soon on the talk show. We covered a lot of topics, but I think currency is something where we can have a full session. Yes. Option Greeks is something where we can have a full session. So we will select some topic, and equity, where you and me bond a lot. उसकी तो बात ही ज्यादा हमने नहीं की है. तो एक हम सेशन कुछ टाइम के बाद फिर से करेंगे जहां पे हम इसमें से अलग अलग टॉपिक लेंगे. This is not your first time on the talk show. You will be here again and again, I assure you, on the talk show, and we'll keep talking on different topics. Sure. Thank you, Vishal. Great pleasure having you, sir. Thank you very much. Thank you very much.